Welcome back, dear engineers. Today in this video we will be just learn about the steel quantity for column by using your Excel sheet. कि Excel sheet को यूज करते हुए आपने स्टील क्वांटिटी कैसे मालूम करना है। पहले हमने क्वांटिटी नहीं कॉलम्स के मालूम किए थे, उसमें हमने मैनुअली कैलकुलेशन किया था। इस वीडियो में आज हम एक्सेल को यूज करके हमने जो अपना कॉलम्स है साइड पे उसका क्वांटिटी स्टील क्वांटिटी कैसे मालूम करना है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने हमारा जो ड्राइंग है, ड्राइंग में हमने कॉलम्स लेआउट ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द कॉलम लेआउट्स in your drawing. For this, first of all you will just come to the schedule of columns. columns का जो schedule है उसी पे आपने आना है। तो सबसे पहले आपने कॉलम्स के जो डिटेल है वो स्टडी करके बाद में आपने इसका क्वांटिटी निकाल देना है। तो सबसे पहले C1, हमारे पास C1 इधर ये ग्रेड्स है, ग्रेड्स में भी आपको जाहिर हुआ है कि C1 किधर किधर आपने उसे इंस्टॉल कर देना है। तो सबसे पहले C1 का डिटेल क्या है, 20/40 इसका सेक्शन है, 20 इसका विड्थ एंड लेंथ इसका है 40। इसके बाद रिइंफोर्समेंट 16 mm का जो बार्स, मेन बार्स इसमें कितने हैं, 8 पीसेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पीसेस ऑलरेडी इधर भी मेंशन है और आपको रिइंफोर्समेंट पे दिया हुआ है। समटाइम आपको ये सेक्शन डिटेल्स जो ड्राइंग में होता है उसमें मेंशन नहीं होता है, समटाइम ये ज्यादा होता है, ये कम भी हो सकता है। ये जस्ट ओनली फॉर द फिगर। तो इसके बाद हमारे साथ स्टेरिप्स या टाइज भी हम बोलते हैं, जो 8 mm के हम टाइज लगाते हैं, वो कितने हैं, 2 पीसेस है इसमें। 1 पीस इधर लगा हुआ है एंड 1 पीस राउंडेबल इधर हमारे साथ एक सेक्शन है, उसमें अभी आप समझ जाएंगे। दिस इज आवर कॉलम्स एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टेरिप लाइक दैट and this is our second stirrup. So there have 2 stirrups for this section and 8 mm का है इसका डाया और 1 मीटर में हमारे साथ कितने पीस है, 7 पीस है। तो अभी हम इसको फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे। 2 stirrups 7 पीस 8 mm पर मीटर। तो पर मीटर में हमारे साथ कितने पीस आ गए, 7 पीस एंड 2 पीसेस तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लेना है। सो दिस इज द सेक्शन डिटेल फॉर दिस कॉलम। आफ्टर दैट C2 20/50 सेक्शन 16 mm 10 बार्स, इस तरह 3 स्टेरिप्स है एंड 7 स्टेरिप पर मीटर 8 mm का इस पे इंस्टॉल हो गए। सो दिस इज ऑल द डिटेल अबाउट द section, how to read the section and detail for the columns. So अभी हम C1 के लिए स्टील के क्वांटिटी मालूम करेंगे कि कैसे मालूम करें, how to find the steel quantity for this. So after that you will go to your Excel sheet. तो Excel sheet में क्या करना है, आपने डाया लिखना है, यूनिट वेट, नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ टोटल लेंथ, वेट एंड केजी, वेट एंड टन्स, आपने इस तरह टेक्स्ट आपने लिख देना है। तो डाया कितना है, पहले हमने मेन बार के लिए कैलकुलेशन करना है, तो आपने इधर 16 mm का। यूनिट वेट क्या होता है, d² डिवाइड बाय 162.162। पिछली वीडियोस में मैंने इस फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था, तो आप जाके उधर आप देख सकते हैं। तो d² डाया हमारे साथ आपने इक्वल पे प्रेस करना है। इक्वल पे प्रेस करने के बाद डाया पे क्लिक करके इसका स्क्वायर लेना है। तो शिफ्ट आप 6 का बटन आपके जो की पैड है उसमें होगा, ये सिंबल है, दिस सिंबल फॉर स्क्वायर। आपने 2 डिवाइडेड बाय 162.162 एंड एंटर। दिस इज द यूनिट वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ बार। 1 मीटर लेंथ बार we have the weight 1.57866 16 mm is dia, so weight will become this kg. After that, number of bars, how many bars we will install in this column. So 8 bars, so you will put here 8.
this I'm just calculating for one column only. After that maybe it will come 6 columns, 7 columns, and so on. So for this you will put another value, like if there are 10 columns and 8 number of bars, so you will put 80 number of bars. Length of one bar, length or height. What is the height for our bar? So for this you will go to your drawing and you will open your cross section of your building or villa or anything that you are making. So for this you can see our height is 4.5 and 4.3 meter. So 4.3 is our height of our column. So after that, what will be the total length? Total length, it is coming this slab length, slab thickness, sorry, and this 4.3, and after that slab thickness, and after that the overlap. So how many meter it will come? So 4.3 plus our slab thickness is 20 centi. So 20 plus 20, 40, it's 4.9, and 80 centimeter is our overlap. So the total length is coming 5.7 meter. Okay. After that, the total length, how you will calculate the total length? Press equal length of one bar multiply 8, enter. So the total length is coming 45.6 meter. Weight in kg, you will press equal multiply shift 8 is the multiplication, and unit weight is 1.5. So the total weight is coming 71.98. So the total weight is say at 72 kg. After that you want this value in ton, so press equal, press this column, this shell, after that divided by 1000, because there have 1000 kg and 1 ton. So press enter. So it's come 0.071 ton. This is coming in ton. So this is the weight of steel for the column, for the main bars, how to find. After that, if it is, maybe it is come 10 columns in with you, so how you can, if it is 10, so you can make it 80, press enter. So the value will become automatically more because the number of bars is more. So the length will be increased, and the total length will also, it will increase. Length is same constant, but the total length will change. So this is the main bar. After that we will find the quantity for stirrups. For stirrup, what you will do, this is our section. For this section, if you see, there have the height of this the width of this column is 40 and the length is 20, or maybe 40 is length or width. So after that what you can do, there have 2.5 centimeter concrete cover हमारे साथ 2.5 centimeter का है, तो आपने for 4 side you will deduct the concrete cover, so it will come 2.5 2.5 here, 2.5 here, so it will come 30, and this side will come 30, this will come 15 and 15. So after that, this is 30 plus 30, 60, 15 plus 15, 30, so 90, 90 plus 30, 15, 15, 60, 30 and 30. So the total value here, it will come 30 plus 30, 30, 60, 90. So the total length of this stirrup is coming 90 centimeter. And there have hooks. For hooks, I already discussed the formula 16D. You can multiply, it will come yani the total length for the stirrup is coming is
number of bar, length of one bar, it is coming 1 meter. Okay, after that, what is the number of bars? So the number of bar for one column, you can multiply. You have 7 stirrups. Where is the schedule? Here in the schedule, as you can see, there have seven number of ties in one meter. So you will multiply this value with this. You can come here, 7 in 1 meter. And what is the length of one bar or height? 5.7, right? 5.7. So equal this multiply this, 39.9, say at 40. So you can write here 40. How these values come? Because in 1 meter there have 7 number of stirrups, and for 5.7 you can multiply this with this. So the total number of stirrups you will find. After that, unit weight you can bring it down, so it will come automatically your formula. So here have 8, you can come down this also. So you can write this, because our dia is 8 mm, so it will come like that. So the total length you can bring it down again, so it will come 440. Weight in kg, bring it down. Weight in tons, bring it down. So this is the methods that how to find the quantity of steel by using your Excel sheet. Easily you can find the quantity of any structure in your drawing. So first of all, I discuss that you will go to your schedule. After that, what is your dia? Unit weight I discuss already. Number of bar, how you can find for stirrups and for your columns, main bars. After that, your weight for the stirrups. So this is the video that how to find the quantity of steel for a column. So thank you for watching the video, and subscribe the channel for more latest updates.